Good morning, team. Yesterday there were a lot of data which came. One was IIP data. IIP data November. It has jumped to 7.1% due to festival season. It is very positive. Inflation has cooled down. Now it is almost 5.7 in India, and even US inflation has come down to 6.5% in December from 7.1% in November. So they are saying Fed hike will be 25 basis point, not more than that. So the hike will now reduce. So this is positive for global market. Yesterday itself we saw dollar index fall. Now it is almost nearly 9 months low dollar index. So that should be something very positive. We have seen Indian rupee strengthening. Now due to which there are few sectors and few stocks which will start to outperform. We had very good results from Infosys and Cyient. I think Cyient, we have a target of 1,000. Revised target, we need to wait. But, we are positive on the stock. And Vishnu Chemicals will do a stock split from 10 to 2 rupees face value. And it will be 1:5 ratio. And, HDFC Bank and DMart also will report their results on Saturday, and Wipro and L&T Finance, the results will be today. So result season is going on. So I think a lot of ideas will be generated. Anand Rathi Wealth, they reported results. I think it was a very good results. Revenue was higher by 29% at 140 crores. Profit after tax was higher by 35% at 43 crores. The 9 months EPS is 30 rupees 20 paisa, and their AUM the 38,517 crores, which is higher by 20%. Jupiter Electric Mobility, subsidiary of Jupiter Wagons Limited, launched 2 electric commercial EVs, electric vehicles, at the Auto Expo 2023. There are a lot of launches in Auto Expo. So that is something, we have been updating on a regular basis. Linde commences construction of its new air separation plant at Ludhiana, Punjab. The unit will be for 250 tons per day. New ASU is expected to start end of 2023. Yes, Action Construction Equipment has received order from Ministry of Defense, DRDO, for supply of cranes. These are indigenously developed special mobile cranes. So there are a lot of specifications which are given to this crane where you can notice what is happening also. So, so this is positive for ACE, which is Action Construction Equipment. Devyani International opened 100 store of Costa Coffee in India, in Khan Market, New Delhi. The QSR operates almost 1,096 stores in more than 224 cities in India, Nigeria, and Nepal. GTPL Hathway, the results came. Their revenue was higher by 15% at 705 crores. But that profit after tax dropped compared to 54 crores previously. It was only 37 crores. So I think there is a problem. We don't track the stock, and we don't recommend the stock also. GM Beverage came with the results. So revenue was up by 17.4% at 153 crores. EBITDA margin at 21.6%. Profit after tax 25.9 crores versus 19.8 crores. Okay results from that. And Mastek partners with King Faisal Specialists Hospital and Research Center in Kingdom of Saudi Arabia. It is one of its first kind healthcare transformation. So with that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. सो फर्स्ट अपडेट थी, कल बहुत सारे डेटा आए थे. उसमें जो डेटा है आईआईपी का नवंबर मंथ का, तो वो नवंबर मंथ का 7.1 था. फेस्टिवल सीजन की वजह से वो पॉजिटिव डेटा आया था. तो इन्फ्लेशन भी कूल डाउन हुआ है, 5.7% है.
और यूएस का भी इन्फ्लेशन देखिए तो 7.1% से वो 6.5 आया है दिसंबर मंथ में। इवन इसके कारण फेड की जो हाइक रहेगी वो भी रिड्यूस हो सकती है, तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। और इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स है वो भी बहुत मतलब नीचे आया हुआ है, 9 मंथ के लो पे चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट है कि कल बहुत सारे आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, तो उसमें इन्फी और सैंड के भी नंबर्स आए थे, वो काफी अच्छे नंबर्स आए थे। जो सैंड के जो प्राइस है, टारगेट प्राइस है, वो हमारी 1000 रुपीज है। वो रिवाइज टारगेट प्राइस हम लोग जल्दी अपडेट करेंगे, तो हम लोग स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है। देन विष्णु केमिकल स्टॉक पे वो स्प्लिट होने वाला है, उसका रेशियो है 1:5, 10 रुपीज से 2 रुपीज में। देन सैटरडे को एचडीएफसी बैंक और डीमार्ट के नंबर्स आने वाले हैं। देन अदानी राठी का नंबर आए थे कल। रेवेन्यू 29% से इंक्रीज हुआ है, 140 करोड़ है। पैट भी 35% से इंक्रीज होकर 43 करोड़ कुछ आया है। 9 मंथ का जो ईपीएस है वो 13.2 पैसा है। उनका जो एयूएम है वो 38,570 करोड़ है, 20% की ग्रोथ उसमें देखी गई है। द नेक्स्ट अपडेट है जुपिटर, जो सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने लॉन्च करने वाले इलेक्ट्रिक कमर्शियल ईवी ऑटो एक्सपोर्ट में उन्होंने लॉन्च की। बहुत सारे कंपनीज है वो उनका लॉन्चिंग कर रहे हैं ऑटो एक्सपो 2023 में, तो हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर उसके ऊपर अपडेट देंगे। देन एस जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है, उनको ऑर्डर मिला है डीआरडीओ से, जो इंडिजिनियस स्पेशल क्रेन के लिए, तो ये पॉजिटिव है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है दिव्यानी जो कंपनी है, वो उन्होंने कोस्टा कॉफी की शॉप ओपन की है दिल्ली में। देन जीटीपीएल हैटटेक कंपनी है, उनके नंबर्स आए थे। रेवेन्यू जो है वो 705 करोड़ है, 15% से इंक्रीज हुआ है, बट उनका जो पैट है वो ड्रॉप हुआ है। बट ये कंपनी हम लोग ट्रैक नहीं करते और हम लोग ये स्टॉक को रेकमेंड भी नहीं करते, जस्ट रिजल्ट अपडेट हम लोगों ने दिया है। द नेक्स्ट अपडेट है जीएम रू के भी नंबर्स आए थे। रेवेन्यू 153 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा मार्जिन 21.6 से इंक्रीज हुआ है, तो नंबर्स जो है वो ओके ओके आए थे। देन नेक्स्ट अपडेट है जो कल नंबर्स आए थे आईटी के, उसमें इन्फोसिस के जो नंबर्स आए थे, वो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ 9.4% का रिपोर्ट किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो 6,586 करोड़ है। रेवेन्यू ग्रो हुआ है 4.9% से 38,318 करोड़। देन रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में इंक्रीज हुआ है 2.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से, जो $4,659 मिलियन है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में रेवेन्यू इम्प्रूव हुआ है 2.4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो रेज किया है। करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 1710 है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से। एचसीएल टेक के भी नंबर्स आए थे। कंपनी के नंबर्स एक्सपेक्टेड से बेटर आए हैं। कंपनी ने 17.4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रिपोर्ट की है और प्रॉफिट जो है वो 4096 करोड़ है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 8.2% से 26,700 करोड़ का। और रेवेन्यू इन डॉलर टर्म्स में हम लोग देखें तो ग्रो हुआ है 5.3% सिक्वेंशियल बेसिस से, और वो $3,244 मिलियन है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट उनका जो वैल्यू है वो स्लाइटली डाउन आया है 1.6% से, और उनका जो आईटी का इटरेशन रेट है वो ड्रॉप हुआ है 21.7%, जो पहले 23.8 था सेम पीरियड में। करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और जो लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस है वो 1114 है। देन वीगार जो कंपनी है, उन्होंने एक्विजिशन है 100% शेयर होल्डिंग सनफ्लिम इंटरप्राइजेस का वो कंप्लीट किया है, और जो उसकी वैल्यू है वो 618.33 करोड़ है। और इस मतलब आउट ऑफ ये जो टोटल कंसिडरेशन है उसमें जो 25 करोड़ है वो कंपनी पेड करेंगी 2 साल के बाद, डेट ऑफ जो क्लोजर है कंपनी के जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है उनको। देन रेल विकास निगम के ऊपर अपडेट है। कंपनी को लेटर ऑफ अप्रूवल मिला है जो प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग जो तुड़कू रीजन गुंटा सेक्शन में, और वो रिप्लेसमेंट करेंगे EIRRI जो तुड़कू में पुड़ी में श्री वेंकटा पुरमला रज्जूपुरम स्टेशन चेन्नई डिवीजन में साउदर्न रेलवे में, और उसकी जो वैल्यू है वो 38.97 करोड़ है। देन एशियन पेंट की जो सब्सिडरी कंपनी है एशियन पेंट पॉलीमर, उनका जो शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ का, वो ऑपरेट मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है विनाइल एसिटेट इथेनॉल
Imugen and vinyl acetate monomer in India. देन नेक्स्ट अपडेट है एनसीएलटी ने मुंबई बेंच के जो एनसीएलटी है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है मर्जर के लिए पीवीआर और आइनॉक्स के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है रमा स्टील ट्यूब्स के ऊपर कंपनी ने एमओयू साइन किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ जो सेटअप करेंगे स्टील प्रोसेसिंग यूनिट और उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 600 करोड़ है। सैन के जो नंबर्स आए थे तो उनका जो यूएस डॉलर में रेवेन्यू है इंक्रीज हुआ है 12.7% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 24.8% से और ओवरऑल इबिटा मार्जिन भी 12.9% से अप है और 98 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 1045 है। देन विंड पावर रिवर्स ऑक्शन के ऊपर एक अपडेट है गवर्नमेंट ने स्क्रैप रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस है विंड पावर प्रोजेक्ट का जो ऑफर करेंगे कम्युलेटिव 8 गीगावाट कैपेसिटी एवरी ईयर टिल 2030 तक और ये सिंगल स्टेज बेस्ड एनवेलप बिडिंग होगा और ये एक्सेप्टिंग होगा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इंडस्ट्री से। देन इसके जो नॉर्म है वो बेसिस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी से आए हैं जो रिव्यू के लिए बिडिंग नॉर्म्स हैं और रिवर्स ऑक्शन और जो सीन है वो रिड्यूसिंग टैरिफ और जो अनस्टॉपेबल अनसस्टेनेबल लेवल से प्रमोटर्स के जो अफेक्ट कर रही थी कैपेसिटी एडिशन के लिए तो ये पॉजिटिव रहेगा आइनॉक्स विंड के लिए और सुजलॉन के लिए। नेक्स्ट अपडेट है मारुति सुजुकी के ऊपर। मारुति सुजुकी ने उनके जो 2 न्यू एसयूवीज अनवील किए फ्रॉन्क्स एंड जीमी ऑटो एक्सपो में और ये दोनों भी पैशनेट है ऑफ रोड के लिए। देन कंपनी ने का बिलीफ है कि वो स्ट्रेंथन और रिबूस्ट करिए एसयूवी और लाइनअप पूरा है। आगे जाकर कंपनी का एम है कि वो अचीव करेंगे 50% मार्केट शेयर पीवी सेगमेंट में और वो एम कर रहे हैं कि वो नंबर 1 पोजीशन सिक्योर करेंगे एसयूवी सेगमेंट में। उनका जो गुजरात का प्लांट है वो फुल्ली कैपेसिटी पे चल रहा है और जो न्यू मतलब अभी जो है और एडिशन करने वाले कंपनी का प्लान है वो इंक्रीज कैपेसिटी करेंगे मानेसर प्लांट में जो 1 लाख यूनिट्स पर एनम प्रोडक्शन होगा और जो उनका जो न्यू प्लांट है हरियाणा में वो भी प्रोड्यूस करेंगे होगा कार्स 2025 तक। कंपनी के जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अराउंड कुछ 3.2 लाख व्हीकल्स हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है मारुति के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है इंडियन होटल के ऊपर। इंडियन होटल ने डेब्यू किया दुधवाड़ा उत्तर प्रदेश में। उन्होंने जहांगीर मनोर होटल ओपन किया है और ये अंडर सिलेक्शन कंपनी का जो सिलेक्शन ब्रांड है उसमें है और टोटल 20 रूम्स होंगे और जो फॉरेस्ट के अराउंड होगा और इसके साथ अभी 17 होटल्स है उत्तर प्रदेश स्टेट में ये ब्रांड के अंदर और इंक्लूडिंग इसमें 7 अंडर डेवलपमेंट भी है। द नेक्स्ट अपडेट टाटा ग्रुप प्लान कर रही है कि वो सेटअप करेंगे ईवी सेल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन यूरोप में जो इंडिया का ओल्डेस्ट कॉन्ग्लोमरेट होगा। और नेक्स्ट अपडेट है लोटस चॉकलेट जो रिटेल वेंचर्स है उन्होंने ओपन ऑफर अक्वायर किया है जो अक्वायर करेंगे 33.39 लाख शेयर्स जो रिप्रेजेंट करेंगे 26% शेयर कैपिटल लोटस चॉकलेट जो कंसिडरेशन है 115.5 पर शेयर। देन एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज से कंपनी ने साइन किया एग्रीमेंट लार्सन एंड टुब्रो जो अक्वायर करेंगी स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिकेशन बिजनेस उसकी जो वैल्यू है वो 800 करोड़ है। ये एक्विजिशन कंप्लीट होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा एक्सपेक्टेड है। देन लास्ट अपडेट है श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। अपेक्स पेरेंट्स है वो उनका जो स्टेक है एंटायर स्टेक वो सेल करने वाली है ब्लॉक डील से आज। सो जो कंपनी है वो लिंक है जो डायनेस्टी एक्विजिशन एफपीआई ये कंपनी लिंक है एपेक्स पार्टनर के साथ और उनके जो अप्रॉक्स सेल अप टू करेंगे 130 लाख शेयर्स और उनका जो 4.60 स्टेक था वो सेल करेंगे। Technicals and derivatives outlook. So in yesterday's session, we one more time we saw that Nifty has seen some amount of selling pressure, but it closed at 17,858 levels. Overall, the market was negative, but the way the way we saw the pullback, it suggests that ki 17,800 level is acting as a resistance, as a support. So we continue to maintain a range bound view for the market for the next couple of days. 17,800 remains the support level, and 18,300 is the larger resistance zone.
But having said this, if if Nifty crosses 18,100, we believe there will be some positive momentum, and this could even lead to a resistance line breakout. But largely, this 17,800 and this 18,300 will be the resistance zone. Coming to Bank Nifty, even the Bank Nifty, if we see the last couple of days, 42,000 is a level which is it is strongly holding, and whenever and secondly, if you see the Bank Nifty, it has broken the 50-day moving average on last Friday, and then then after that it has been trading sideways. The levels of the 50-day moving average is 42,749. So in the near term, if Bank Nifty sustains above 43,000, then again the Bank Nifty will start moving on the higher side. So for both the indices at current levels, we maintain it's a range bound trading session, where at the lower levels the buying is coming in 41,800 on the Nifty and 42,000 for the Bank Nifty. If we see largely over the last couple of weeks from this recent end, both the indices are almost corrected 6% in the Nifty and 5.46% on the Bank Nifty. So we believe that there can be some amount of bounce in the indexes, and till we don't see the budget session, I think there will not be a major correction in the market. Even if the 17,800 is broken, another 100, 200 points, there is a possibility market may find support, and it may see some bounce. So we will maintain a range bound view for the next couple of days till we see a very clear-cut breakout or breakdown. Coming to this derivatives data, in derivatives, the Nifty futures has seen a short build-up, and even the Bank Nifty has seen a short build-up. Nifty has seen a short build-up to the tune of 1.82%, which was addition of 2.39 million shares. And the PCR actually in Nifty has gained from 0.75 to 0.77. So that's little bit positive. And the major additions were seen in the 18,000 call option. So that will be and 18,100 strike price. So this should act as a resistance. While on the lower side, 17,900 and 17,800, there is a significant increase in open interest in the put option. So that should be the support. Coming to Bank Nifty, even the Bank Nifty, we saw the addition of shorts to the tune of 1.72%, which was the addition of 24.13 million shares. But in Bank Nifty, the PCR has declined from 0.81. It has declined to 0.75. So slightly cautious. So, and from the OI data, the 42,200 and 42,300 put options have seen a significant interest in OI. So that should act as a support. And on the higher side, 43,200 has seen a significant interest in the call rent option. So that should be the resistance. So coming and few stocks which we are liking for the current days, L&T, SBI Life, JSW Steel, and M&M. So these are the stocks which should move higher whenever the markets start moving higher. Coming to the FI data, the FIs in the index future, they are they sold close to 5,700 contracts, and net they are short by 36,000 contracts. The long short ratio, which was at 41, has now come to 38. So that's again a little bit of cautious note. So for the day specific, I think as long as 17,800 levels are held, we should see some bounce in the market. Looking at the SJK also, there is some 50-60 points positive. So I think we should trade with positive bias for the day. So that's all from my end. I'll hand over to Archana madam for more research updates. Thank you, Brijesh. Good morning, team. Few updates from my side. Starting with Infosys, the company clocked a 9.4% QoQ growth in profit at 6,586 crore, and revenue grew by 4.9% to 38,318 crores, beating the analyst expectation. Revenue in dollar terms increased by 2.3%, and in constant currency, revenue growth was at 2.4%. The company raised its FY23 revenue guidance in constant currency terms to 16 to 16.5% from 15 to 16% earlier. And EBIT margin guidance remains unchanged at 21% to 22%. We have buy rating on the stock with a target price of 1710. On SCL Tech, the company reported better than expected earnings for Q3 FY23. It clocked a 17.4% QoQ growth in the quarter
with profit at 4,096 crore and revenue increased by 8.2% to 26,700 crore. Revenue in dollar terms grew by 5.3% sequentially, while in constant currency revenue growth was at 5% for the quarter. The total contract value was down by 1.6% sequentially, while the IT attrition rate dropped to 21.7% from 23.8% during the same period last year. The company has revised its full year constant currency revenue growth forecast to 13.5% to 14%, and it has also lowered the EBIT margin guidance to 18 to 18.5% from 18 to 19% earlier. We have hold rating on the stock with a target price of 1140. One more update on HCL Tech. The company has been selected by Mattel to drive the transformation across the latest global technology landscape, cutting the across applications, infrastructure, and information security domains. So that is, the positive development on the company's front. On Vigar Industries, the company has completed acquisition of 100% shareholding in Sunflame Enterprises for 680 crores. Out of the total consideration, rupees 25 crore will be paid by the company to the selling shareholders after 2 years from the date of closure. On RVNL, the company has received a letter of approval for provision of automatic block signaling in Takadu Rangitara section and replacement of EIRII in the same project for the project cost of 38.9 crores. On Asian Paints, the company has incorporated a subsidiary, Asian Paints Polymers, with a share capital of 100 crore to operate a manufacturing facility for vinyl acetate ethylene emulsion and vinyl acetate monomer in India. So that is a positive development on the Asian front. On PVR Inox Leisure, the Mumbai bench of NCLT has approved the merger of two companies. Again, a positive development for PVR Inox. On Rama Steel Tube, the company has signed an MOU with Uttar Pradesh government to set up a steel processing unit with a proposed investment of 600 crores. On Cyient, the company's group US dollar revenue increased by 12.7% and 24.8% QOQ YOY to 197 million. The IT services revenue of USD 167.9 million was up 11.2% and 30.1% QOQ YOY. Overall, EBIT margin of 12.9% was up by 98 bips QOQ. We have buy rating on the stock with a target price of 1045. Some update on wind power reverse auction. The government has scrapped the reverse auction process for wind power projects and will offer cumulative 8 gigawatt capacity every year till 2030 through single stage closed envelope bidding, accepting a long pending demand from the industry. The norms are based on the recommendation of a committee that was asked to review the bidding norms. Reverse auction was seen reducing tariffs to unsustainable levels for promoters, which affected the capacity addition. And this is a positive development for Inox and Suzlon. On Maruti Suzuki, the company has unveiled 2 new SUVs, Fronx and Jimmy, appealing to the both new age SUV customers as well as passionate off-roaders. The company believes that this will further strengthen its robust SUV lineup. Going forward, the company aims to achieve 50% market share in PV segment and aims to secure #1 position in SUV segment. So the plants will be in Gujarat. The Gujarat plants are running at full capacity right now. And in addition to that, the company is planning to increase capacity at Manesar plant by 1 lakh units per annum. And new plant in Haryana will be producing cars from 2025. So overall, this looks pretty positive on Maruti Suzuki's front. Now, secondly, lastly on ISCL, the ISCL has marked its debut in Durwa, Uttar Pradesh with the opening of Jagir Manohar Hotel. This is a new addition, will be under company's selection brand. The hotel will have 20 rooms surrounded by forest and everything. With the addition of this hotel, ISCL will have 17 hotels across brand in the state of Uttar Pradesh, including 7 under development. So we have been pretty vocal about the company adding at least 1 hotel every month, and the run rate has been pretty strong for the company. Going forward, we are positive on ISL in the domestic hospitality space. So that's it from my side. Now I request Vikash to take it from here. Thank you, and over to you, Vikash. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Further news updates are on Shriram Finance. Private equity firm Apex Partners is likely to sell its entire stake in the company through a block deal on Friday. Dynasty Acquisition
IDBI, a company linked to Apex Partners, is expected to sell up to 173 lakh shares, representing 4.6% stake in the company. L&T Technology Services, the company has signed an agreement with partner Larsen & Toubro to acquire its smart world and communication business for rupees 800 crore. The acquisition is expected to complete in 3 months. Tata Group planning to set up EV cell manufacturing operation in Europe as it tries to accelerate its British Mercury unit shift to battery-powered cars. On One Communication, China's Alibaba Group on Thursday sold 2.95% stake in Paytm parent One Communication through the open market for rupees 1,031 crore. It sold around 1 crore 92 lakh shares of the company at rupees 536 a share, a bulk deal data showed. And lastly, on Lotus Chocolate, Reliance Retail Venture has made an open offer to acquire up to 33.39 lakh shares, representing 26% of the share capital of Lotus Chocolate for a consideration of rupees 150.50 per share. And the total outgo is pegged at rupees 38.56 crore.